guys, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बनाना ब्रेड which is gluten free and sugar free. So let's get started. It's a healthy option क्योंकि if you want to eat sweet and still make it guilt free, banana naturally sweet रहता है and this is a great tea cake post meal. अगर sugar craving है तो you can eat it that time also. मुझे तो इवनिंग स्नैक में जब क्रेविंग होता है ना कुछ जंक खाने का, सो आई लव हैविंग दिस. सो आई हैव प्रेप्ड एवरीथिंग. दिस इज अ मिक्सिंग बोल. वी नीड 2 eggs, vanilla essence. आई एम यूजिंग लिंट 70% डार्क. यू कैन यूज 90%, 50%, जितना भी डार्क पसंद है. बेकिंग सोडा. दिस इज अ monk fruit sweetener. It is a really good sugar replacement, so can be tried. I'm going to add very less, like 1 teaspoon. This is an avocado oil spray. This is almond flour and some overripe bananas. मतलब बनाना ऐसे ना काले हुए रहने चाहिए. That's the best time because they are the sweetest at this time. एक fork से I'm just gonna mash the bananas. ये काफ़ी soft है तो ये easily mash हो जाएंगे. You can use a masher, but आप जितना roughly mash करोगे उतना अच्छा रहेगा. Don't put it in the mixer or something. It will become like a milkshake. जस्ट इसको एक प्रेस पे ये मैश हो जाता है क्योंकि ओवरराइप बनानाज ऐसी एज इट इज़ सॉफ्ट होते हैं. या थोड़ा चंकी रहेगा ना तो इट गिव्स गुड फ्लेवर एंड टेक्सचर टू योर बनाना ब्रेड. बट ये वाली रेसिपी में एग्स है. आई डोंट नो व्हाट इज़ अ गुड एग रिप्लेसमेंट. आई विल ट्राई. मैंने एक और रेसिपी देखी है विद पीनट बटर, बट आई थिंक दैट ऑल्सो हैज़ एग्स. So I'm going to have to read and see what is good. Baking is literally my therapy. I love it. Cooking, I love to cook and bake. And baking se na, there's a really nice aroma in the house of something about freshly baked goods. See, it's become this mushy thing just by mashing with a fork. You can use that pav bhaji masher, but नॉट नेसेसरी. ये इनफ है. 2 eggs एट रूम टेम्परेचर मैंने निकाल के रखे थे. मैंने दीप्ति को बोले थे निकाल के रखने. आई जस्ट ब्रेक देम इन अ सेपरेट बोल कि अगर ख़राब हो तो मेरे बनानाज ख़राब ना हो जाए. आई नीड अ टिश्यू. आई हैव अ हैबिट. I have to wipe or wash my hands after touching everything. Oreo, are you my assistant? I told you to go out now, bachche. See, this is how the bananas look. It's nice and lumpy. And ये 2 eggs है. I'm just gonna roughly whisk it. ऐसा कुछ फेंटना ज़रूरी नहीं है. But before I mix it in the egg, in the banana, I'll just mix the yolk and the whites. And now I'll transfer it into this. I'll just roughly mix the eggs. ऐसे फेंटना नहीं है. It doesn't have to become frothy. And I'm just gonna transfer it into my banana mix. Oreo तो ओवरराइप बनाना भी खा लेगा. उसको बनानास पसंद है. बट कभी कभी ना डॉग्स को बनाना से कॉफ होता है. सो वी आर अवॉइडिंग गिविंग हिम बनाना क्योंकि उसको बैक रिवर्स कॉफिंग का प्रॉब्लम हो रहा था. See guys, I'm mixing it. Once you mix the eggs, last में डालेंगे almond flour. I just have to weigh the almond flour. So where is the scale? It's here. I have a measuring scale in the kitchen, like a weighing scale. So I just add some vanilla essence ताकि you don't get the smell of the eggs. I just add it मेरे हिसाब से, but you can use 1 teaspoon. But for the baking soda, I will need a measuring spoon. जो मैं निकाल के रखना भूल गई, but हाँ है यहाँ पे. 1. This is half, 1/4. 1 teaspoon. Have I written 1 teaspoon? Yeah, 1 teaspoon. Always when you take any powder, it has to be like, just dab it
and remove of the excess like that. So this is what 1 teaspoon should look like. Add the baking soda and this is just to help it rise, because इसमें कोई gluten नहीं है, मैदा नहीं है, आटा नहीं है, तो bread rise कैसे होगा. You can add a monk fruit sweetener. I'm adding half a tablespoon. थोड़ा सा ही ऐड करना है क्योंकि बनानास काफ़ी स्वीट होते हैं, तो it's not really needed. Actually, I can skip this also. Just adding, I'm gonna add half of it. Monk fruit is a really good alternative. Surya's nutritionist has recommended this because it's also keto friendly. And it's a 1:1 replacement to sugar, तो you can चाय वाय में भी डाल सकते हैं. काफ़ी अच्छा है क्योंकि बिल्कुल भी आफ्टर टेस्ट नहीं है जैसे स्टीविया का होता है. Now I've mixed everything and I think that's the only thing left is the almond flour. और कोई आया है, so I'm just gonna go and check कि कौन है. So I'm gonna take the almond flour and add it. I hope it turns out good. It's been a while since I made this. मैं इसी फोक से उसको हल्का हल्का मिक्स कर रही हूँ. आमंड फ्लावर में थोड़े लम्प्स होते हैं, so I'll shift to a spatula वो लम्प्स को निकालने. बट जैसे ही वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है ना, it becomes fine. See, it's absolutely fine. But I will still use a spatula just for safety. Chota spatula, my mini. So when I go to when we travel, एक दिन तो I try एक अच्छे सुपरमार्केट जाने, like a home store. If I'm in the US, then Target or Costco, या UK में Sainsbury और Tesco, जहाँ पे home products भी मिलता है. So I pick up all these because हर एक country में there are different products that you know they have, and some handy products I pick up ऐसे एक दो चीज़ें. ये स्पैटुला वैसे का कमाल है. कहीं तो मैं गई थी, छोटा स्पैटुला देख लिया, बट यहाँ आने के बाद देखा कि अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है. सो इंडिया में सब कुछ मिलता है. मिक्स मिक्स मिक्स. सी, इट्स बिकम अ नाइस बैटर एंड आई एम जस्ट गोना ब्रेक अप सम चॉकलेट चिप्स रफली. ऐसे रफली क्रैक किया है मैंने, इफ यू कैन सी. And I'm just gonna make it a little smaller. I'll show you guys. You can chop it up also, but like uneven chocolate tastes looks so nice on. I'm gonna add 2 more, maybe 3 more pieces. Dark chocolate is love. I really love it. मैंने सबको किचन से बाहर भगा दिया है. ओरियो भी चला गया है. ओरियो आएगा आएगा. आ गया आ गया आ गया, मेरा बेटा आ गया. Easier. Hi, you want banana? What you want, my baby? You want to play ball? Go. Pablo's playing ball. Go. Oh, Pablo's also come. Who wants ball? Go. बैठ गया. बनाना के नाम पे ओरियो कुछ भी कर सकता है. See, I've put in the chocolate chips and just gonna fold it in. येऊ शकते दीप्ती तू. यायचं तर येऊ शकते. नाही यायचं. ठेवले काय सगळं? Super efficient people.
दे आर टिपटोइंग इन द किचन ताकि मेरा वीडियो डिस्टर्ब ना हो. एक और डाल दिया है मैंने. सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आई लाइक टू सी ऑन द in the dough. It's looking good enough. We can, you know, shift it into the tin. इसमें कोई रेस्ट का ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्ट्रेट डाल दो और अवन में डाल दो. सो दिस इज़ माई बेकिंग टिन and it is clean. This is a avocado oil spray, or you can just take any oil or butter and brush it on the pan, on the baking tin. Just gonna take the brush to spread it evenly क्योंकि एक जगह इकट्ठे हो जाता है. So just take it and वैसे तो सब जगह लग चुका है. इसमें ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है स्प्रे. एंड आई एम जस्ट गोना ऑल्सो इवन इट आउट विद अ ब्रश फॉर सेफ्टी ताकि चिपके ना मेरा केक, मेरा बनाना ब्रेड. आई थिंक इट्स ओवर. बैक टू नॉर्मल ऑयल. ये तो मुझे फूड गिफ्ट हैम्पर में मिला था, सो हम उससे काम चला रहे थे. बट आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ. एंड माई डो, सी माई कुकी डो, my banana bread dough. I'm gonna just transfer it. Excuse me. Oreo is also here. You can't eat any of the banana bread, babu. You can eat the banana. I'll give you some banana. Thoda hi. So as you can see, I've just added some more chocolate chips on the top. I'm just gonna tap it down and pop it into the oven. Please don't forget to use oven mitts क्योंकि oven काफ़ी गर्म है. Oreo is still here. Oven is nicely preheated. Hi babu. I'm just gonna take this and pop it into the center of the oven. Okay, close. And this we will do for 30 minutes. It's in there. I've set it for 70, but मैं अब फोम में टाइमर लगा दूंगी. So that was a quick and easy banana bread. We'll try it once it's. काफ़ी गर्मी है ना. किचन में तो होता ही है because खाना बनता है यहाँ. I'm just gonna pop all of this to wash. And yeah, that's it. Now we'll wait for it to bake for around. I will check it once at 25 minutes and just pop a toothpick or a baking pin. It's this checker. I have a cute one since the days I used to bake. So I have this. Just gonna check the bread if it's done. And बस इतना ही था. Having some water. I am the Stanley girl. So we'll wait and तब तक I will let my maids clear this ताकि dinner बन सके. और जब बन जाएगा you can pair it with any vanilla ice cream. Personally a sugar free one is even better because इसमें जो बनाना का sweetness है वो और आएगा. If the ice cream is very sweet, मज़ा नहीं है and it's pointless of eating. Then you eat a normal banana bread made with normal sugar and maida. So there's this one from Brooklyn Creamery that we have and I'm gonna have it with that. Toodles! I'm gonna come back once the bread is ready. So I'm checking the cake. It looks like it's done. Toothpick has come out clean and I'm going to switch it off. Masala. So the cake is yum, but it's stuck to the bottom of the pan. I didn't season the pan well, I think, because the avocado oil spray was almost over, and you know, I should have
just brushed it some more. But let me see how it tastes. I hope it tastes good enough. I had a little bit, it tasted good. This is the moment. It's good, guys. It's really good. Chocolate. Just that, you know, stuck to the bottom of the pan, and I turned it upside down and it, you know, came off like this. But otherwise, it's a good cake. Can enjoy this in my tea time. If you want the recipe, let me know in the comments. I'll put it down there. And like, comment, subscribe if you like what you saw. I'll share some more recipes of things that I like to bake. Excuse me, I'm enjoying the cake. And actually the dark chocolate adds the perfect balance, the sweetness of the bananas.